Hello dear students, in this particular video we are going to learn motion of a charged particle in a uniform magnetic field. In the previous video हम लोगों ने सीखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली 0 डिग्री एंगल पर एंटर करता है तो कैसा पाथ होता है, 90 डिग्री पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसा पाथ होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड केस when the initial velocity makes an angle of theta with the direction of magnetic field. So under this condition, the path of the particle will be helical. We have to understand one by one. So यहाँ पर हम लोगों ने this we have taken as x-axis, y-axis and z-axis, and let us assume a charge is in the magnetic field. This is the direction in which magnetic field is pointing along x-axis, and let us say this charge enters into the magnetic field with velocity v making an angle theta with magnetic field. So velocity will have two components, one parallel to magnetic field and one perpendicular to magnetic field. For the path followed by the particle will be perpendicular. So how to decide why the path will be perpendicular to this, and it will be helical in shape. I will be explaining you, but right now I'm just drawing the diagram. That's it. Okay. We can extend this x-axis. इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया हमने. This is the direction of magnetic field. So this is the helical path, helix, and this distance between these two successive points we call pitch. We'll discuss one by one, but this is the complete figure. Now let us come to the point. The velocity is having two components. One is parallel to magnetic field, that is v cos theta, and one is perpendicular to magnetic field v sin theta. In previous video बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल when the charge particle is moving along the magnetic field तो straight line path पर move कर रहा था when theta was 0 degree, but when theta was 90 degree they were moving on circular path. यहाँ पर क्या है, दो कंपोनेंट है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से लीनियर मूवमेंट होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मूवमेंट होगा.
बट एक जगह पर फिक्स तो नहीं है सर्कुलर मोमेंट के लिए मूवमेंट, तो जिसके कारण क्या होगा कि चार्ज आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। सो दे विल नॉट फॉर्म एग्जैक्टली द सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ होगा। ऐसे पाथ को क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम लोग ये जो पैरेलल कंपोनेंट, इसकी वजह से लीनियर मूवमेंट होगा, तो पिच का कैलकुलेशन करेंगे। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, जो वेलोसिटी पर, सॉरी बी पर जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, उसके वजह से जो सर्कुलर पाथ होगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? तो द रेडियस ऑफ, और वी कैन राइट सम पॉइंट हियर, ड्यू टू perpendicular component of velocity, the charged particle experiences a force F is equal to QVB, and यहाँ पर V जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट इज QV परपेंडिकुलर इनटू P। नाउ दिस फोर्स which acts in perpendicular direction perpendicular to both this force vector, perpendicular to both V perpendicular, दिस फोर्स इज, ये जो फोर्स वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, एंड मैग्नेटिक फील्ड पी वेक्टर, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ओनली द चार्ज मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ड्यू टू दिस फोर्स charge moves on circular path in the YZ plane. So now radius we know R will be equal to M into V perpendicular upon QB. So M and V perpendicular is V sine theta upon QB. So this is the radius of the circular path, and when they will move on circular path, so they will be having some time period of revolution also. So the period of revolution is time total distance upon speed, so 2 pi r circumference के बराबर का distance होगा upon speed, और speed यहाँ पे हमने कौन सा लेना है? perpendicular component, so 2 pi upon V perpendicular is V sine theta, and radius is MV sine theta upon QV। तो यहाँ से V sine theta कैंसिल हो जाएगा, we can write T equal to 2 pi into M upon QB। नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जिसको लीनियर मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, सो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ड्यूरिंग टी टाइम, that distance we call pitch. So let us write down that pitch also.
The linear distance traveled by the charged particle in the direction of magnetic field during its period of revolution is called pitch of the helical path, and it is given by that pitch distance is V parallel component into T, that is V cos theta into 2 pi m upon QB. So finally we get 2 pi m V cos theta upon QB. This will be the pitch value. So 2 pi m into V cos theta upon QB, this will be the horizontal distance covered by the charged particle in one time period. Thank you.